डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, ठीक है, यस। डिस्कम्फर्ट महसूस होता है क्योंकि उनके काम अलग अलग रहेंगे, चाहे जितनी कंपनियां, हम लोग ने जितनी कंपनियां चेंज किया है 10 से 15 दिन, अच्छा हम लोग के बीच आदत, अब आदत पड़ गई कि 10-15 दिन तो आपको काम समझने में, उनके अपने काम करने के तरीके को समझने में टाइम लगता है। और फिर उसके यस। बाद फिर ये भी कोशिश करना चाहिए कि कैसे जैसे ना, तुम वहां पर तुम्हारा ये काम होना चाहिए कि तुम कितना जल्दी कितना ज्यादा काम सीख जाओ, और यस सर। जिस दिन लगे कि नाउ दिस इज द सफिशियंट, आई लर्न हियर वट एवर रिक्वायर्ड, अब समय आ गया है चेंज करने का, ठीक है। कंपनी के सब लोग याद रखो, ठीक है, अभी आपकी बैच लगभग इंडिंग पे है इसलिए बता रहा हूँ, कभी भी व्हेन यू फील लाइक देर इज नथिंग एक्स्ट्रा विच आई कैन लर्न, दैट मीन्स दैट इज द राइट टाइम टू स्विच योर कंपनी, ठीक है। लोग हाँ। बोलते हैं ना कि आतिश की कितने साल काम करो ये कंपनी में, है ना, हाँ सर। ठीक है। तो साल से मतलब नहीं करता है, साल मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि अब कितना बचा हुआ है उस ऑर्गेनाइजेशन में सीखने के लिए, ठीक है। तो सर एक और बात पूछने की थी बोलो। कि अभी सपोज की कोई कंपनी रहती है तो उसमें एक्सपीरियंस वगैरह लगता है, तो करेक्ट। सर अपन ऐसा कुछ कर सकते हैं क्योंकि आपके कंपनी में हम लोग काम किया है, ऐसा एक्सपीरियंस लगा सकते हैं या फिर उनको बता सकते हैं, वो लोग पूछते तो है तो देखो लास्ट टाइम का इंटर्नशिप बता पैकेज सकते और हो, ऐसा सब कुछ। इंटर्नशिप बता सकते हो, ठीक है, स्टाइपेंड बता सकते हो, बट क्या बोलते हैं, कैसे होता है कि जैसे कि अगर मेरे पास कोई एम्प्लॉई है ना रजिस्टर्ड रूप से, तो गवर्नमेंट का हाँ। रूल होता है, जैसे अपनी कंपनी जो है वो एमएसएबी में रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो जब एमएसएबी में रजिस्टर्ड होती है कंपनी, तो वहां पर जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमें ईयरली ये डाटा देना पड़ता है कि हमारे पास कितने फुल टाइम एम्प्लॉई है, ठीक है। ओके सर। तो ये हमारा रिकॉर्ड होता है, तो इसलिए कोई भी इंसान, इंटर्नशिप क्या होता है, इंटर्नशिप तो इंटर्न तो कोई भी हो सकता है ना, इंटर्न इन द सेंस तुम सीखने आ रहे हो, है ना। हाँ और सर। बट फुल टाइम एम्प्लॉय जो होते हैं उनकी इसीलिए देखो कंपनीज के अंदर अटेंडेंस होती है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, फिलहाल तुम स्टूडेंट हो, बट ऐसे होता है कि अगर मैं किसी को फुल टाइम का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि ये तुमने मेरे साथ काम किया हुआ 1 साल अप्रॉक्स, ठीक है, तो नेक्स्ट बनता है, क्योंकि मैं लॉयर भी हूँ, तो बता दूं कि नेक्स्ट केस क्या बनता है पता है, तुम मेरे ऊपर केस कर सकते हो। अब बताओ कैसे। इससे सर। 1 साल काम किया, पैसे ही नहीं दिया। ठीक है, उल्टा मैं ही हाँ। फंस गया, ठीक है। समझ गया। 1 साल काम किया और उल्टा फंस गए तुम, मतलब मैं फंस गया कि क्या बोलते हैं सैलरी समझ स्लिप। गया। हाँ तो भाई सीधी सीधी बात है, और 1 साल तक इन्होंने हैरेस किया एक तरीके से मुझे काम करा के, है ना। तो समझ गया सर। इस तरीके से कोई भी रजिस्टर्ड रूप से कभी नहीं करता है। और इसीलिए बस एक्चुअली कोर्ट केस में अगर जाओगे ना, तो मतलब बहुत सी ऐसी चीजें हैं। अभी लोग बोलते हैं कि सर एग्रीमेंट एग्रीमेंट हो गया है, बॉन्ड भरा लिया है, ठीक है, तो बॉन्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं, ठीक है। अगर आप फ्रीडम कंट्री में रह रहे हो, खासतौर से इंडिया की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर बॉन्ड नाम के कोई, अभी तक में मैंने, तुमको सबको पता है, एक सेमेस्टर हो गया, दूसरा सेमेस्टर मेरा लॉ का चल रहा है, ठीक है, अभी तक मुझे बॉन्ड नाम की कोई चीज नहीं दिखी है पूरी बुक में, ठीक है। मैंने ह्यूमन रिलेशनशिप से लेके, मैरिज रिलेशनशिप से लेके, लॉ के एक्ट से लेके सारा पढ़ डाला, ठीक है। मुझे बड़ा मजा आता है, मैंने वो रहता है, मैं एग्जाम के लिए नहीं पढ़ता सर हूँ। कोई कंपनी अगर ऐसा बोलती है तो मतलब अगर सपोज क्या अगर अपन ने लगाया और छोड़ने का रहा तो ऐसा कुछ। नहीं देखो, किसी का नुकसान करके छोड़ना दैट इज रॉन्ग, ठीक है। वो एक एक्ट बनता है कि आपने किसी का नुकसान किया, नुकसान कैसे कर सकते हो आप, किसी का प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, और उस प्रोजेक्ट को चलते चलते बीच में ही आपने छोड़ दिया, दैट इज द रॉन्ग मैनर। और इस चीज के लिए एक केस बनता है कि आप एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पर वर्क करके उसको बीच में छोड़ दिए, जिसको अब कुछ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये केस उस चीज का नहीं बन रहा है, ये केस बन रहा है कि आपने हेल्प नहीं की इस कंपनी की, इतने दिन आपको और हेल्प करना चाहिए, इसको कंप्लीट कर देना चाहिए। और अगर सर कंप्लीट किया तो तो हो और गया, बॉन्ड तो है और कंप्लीट भी किया है ऐसा। कंप्लीट किया है, तुमने इन्फॉर्म किया हुआ, मतलब तुमने रिजाइन मेल डाल दिया हुआ है, ठीक है, दैट मीन्स कि आप अपने तरफ से फ्री हो चुके हैं उस ऑर्गेनाइजेशन से, ओके। ठीक है। आपने बोला कि भाई हमने मेल कर रहा हूँ इतने महीने के लिए, मैंने रिजाइन पीरियड था इनका, वो रिजाइन पीरियड पूरा किया, प्लस इनका जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट था मैंने कंप्लीट कर दिया। हो सकता है वो कंपनी गुस्से में तुम्हें एक्सपीरियंस लेटर ना दे, तरह तरह की चीजें ना हो, वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, ठीक है। बट क्या बोलते हैं, रही बात की कोई एक्शन की, तो कोई लीगल एक्शन नहीं है इसमें, ठीक है। ये ओके सर। स्टार्टिंग में इसलिए क्यों डराया जाता है, क्योंकि जनरली क्या होता है, जब तुम कंपनी में जब जाते हो बड़ी कंपनी में, तो कंपनी हमारे से बड़े बड़े ट्रेनर्स को, मतलब कि हम क्या है, हमसे भी बड़े बड़े ट्रेनर्स होते हैं, ठीक है, हम लोग तो छोटे मोटे हैं, तो ट्रेनर्स को बुला के, अभी रिसेंटली हमको एक कंपनी ने 1 घंटे ट्रेन करने का 1.5 लाख रुपए पे किया है, 1.5 लाख रुपए 1 महीने के लिए। आप सोचो कि 1.5 लाख रुपए, वो कितने कितने एम्प्लॉय थे, मुश्किल से 8 एम्प्लॉय थे उस कंपनी में,
ठीक है। तो अगर 8 एम्प्लॉय के पीछे उसने 1.5 लाख रुपए मुझे दिया हुआ है, प्लस उस 8 एम्प्लॉय को सैलरी दिया हुआ है, मतलब उसका कितना लॉस हुआ? अगर वो छोड़ के चले गए 1 महीने बाद, तो क्या उसका लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? राइट सर। ठीक है। 1.5 लाख रुपए मुझे दिया, कम से कम 2.5 लाख रुपए उस आठों की सैलरी होगी, 2.5 से 3 लाख रुपए, मतलब 5-6 लाख रुपए का नुकसान तुरंत अगर हम कर रहे हैं। इसलिए कंपनी क्या चाहती है कि भाई एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, जैसे फ्रेशर के दिमाग में रहे कि भाई एग्रीमेंट हुआ है, बॉन्ड हुआ है। और अच्छी बात यही है कि अगर किसी ने आपके साथ अच्छा किया हुआ है, आपको सिखाया हुआ है, तो आपको अपनी सर्विस देनी चाहिए। क्योंकि ये राइट सर। पता नहीं चलेगा कब तुम फिर से उनके उसी क्राइटेरिया में आ जाओगे, फिर से तुम्हारी जरूरत उनको पड़ सकती है, उनको तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है यस। ना? तो इस चीज को अगर ध्यान रखते हो तो अच्छा रहता है। चलिए, लेट्स स्टार्ट नाउ द मॉक, बिकॉज द टुडेस टॉपिक इज मॉक। सो लेट्स स्टार्ट विथ मिस्टर नितिन शर्मा। Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नितिन, what you plan? You going to start your beam? Yes, sir. Okay, you added in the group, or you not got it right now, na? No, no, sir. Okay, after class you just WhatsApp me, I'll just add you. Okay. Okay, sir. Okay, what are the important IS codes in structure engineering we used? IS 456 2000 and IS and 1893 and 800 Okay, and ध्यान नहीं आ रहा सर. IS 800, IS 875, 5 parts. What are the 5 parts in IS 875? Sorry, sir. I don't. कैसे तुम अचानक से सारी चीजें भूलते जा रहे हो नितिन यार? ओके। पता नहीं क्या हैं? हुआ. पता क्या? नहीं क्या हुआ. ठीक है। हालत तो सही है ना? ब्रेकअप वुकअप तो नहीं करके बैठे हो? नहीं नहीं हैं? कि मतलब चला देवदास बने हो और नहीं नहीं जाम पे जाम लिए जा रहे हो, कुछ पता नहीं चला लाइफ में क्या चल रहा है? नहीं. तब ठीक है। हमें अपने होशो हवास में रहना चाहिए आंसर देने के लिए। फिलहाल ओके, in stat pro, if there is a warnings density not provided, how can we fix that warnings? सॉरी सर. अरे कुछ बताओ तो। सर पता नहीं क्या हो रहा है. नहीं आ रहा कुछ भी यार. ओके, तुम इतना अच्छा आंसर कर रहे थे, अचानक से तुमको पता नहीं क्या हो गया है। चलो कोई बात नहीं, क्या बोलते हैं, ट्राई टू प्रिपेयर। ओके। जी जी. ओके, नाउ नेक्स्ट इज मिस्टर विक्रम। मिस्टर विक्रम, विक्रम, आई थिंक देर इज अ वॉइस प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड। एक बार लेफ्ट करके आ जाओ विक्रम, तब तक मैं शशांक का मॉक ले लेता हूँ। एक बार लेफ्ट करके आ जाओ, तुम्हारा साउंड का प्रॉब्लम लग रहा है। हाँ, शशांक, आर यू रेडी? Hello, good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। शशांक, व्हाट आर द 5 IS 875 parts? Explain the parts and their uses. Sir, IS says 875 Part 1 is used for dead load. Second is used for live load. Third is used for wind load. And fourth is used for earthquake. And fifth is load combination. Fourth is for earthquake. Okay. IS 1893 2016 used for what? So that is used for earthquake, sir. Okay, that is for. That is for earthquake. So IS 875 Part 4 is used for? Sir, I don't have idea, sir. Okay. Snow load. Snow load. Snow load. Okay, sir. What do we understand by lateral force? So lateral force are the horizontal force that occurs during the earthquake or during the wind. That is parallel to the ground, and it causes it. We study lateral forces in dynamic analysis. Okay. Explain shear wall. Whatever you know about shear wall, explain. So shear wall we use where when we provide column and the column is not able to pass the building, then we provide shear wall. A shear wall starts from 1 meter thickness, and so 1 meter its width, and thickness starts from 150 mm to 600 mm. And there are several types of shear wall, simple rectangular type shear wall which we used outside the building, and coupled wall shear wall which is made by joining the beams and columns of two buildings.
and there is a rigid frame shear wall which we use in high-rise buildings, or framed wall with HTC infill, and a column support shear wall and core type shear wall. Core type we use in lift areas. Why you want to left your current job and you want to join as a structure engineer? Sir, because in the last 4 years I have worked in site engineer, and I am always surprised how and why steels are provided and how to provide a definite amount of steel. So I was fascinated by this, and so I also thought that in the later future I will move on to the structure, so that I have executed and now I want to design the structure. Any one advantage of your current organizations and one disadvantage, means one thing which you like most about your current organizations and one thing you don't like about your current organizations. So means I don't understand what. In your current company, what you like Yes. and what you don't like, any one qualities which you feel like, okay, this is good in this company, and any one things which you feel like this is not good in this company. So So one thing that is good in my company, it is target oriented. Suppose I have get a target of 1 month, and I have pressure to complete that project up to the certain part. Suppose for current project I have to finish columns up to slab level in the this month's end. So this thing I like it, but the another thing is that the procurement of material is the most hectic part on the site engineering job. Everything is ready. The cement is not arrived on the site. The steel not arrived on the site. There is a bit of local tension arises on the site. These are the things which hamper the civil engineering project. But in my last 4 years, I have never visited a site which is not hampered by the local quarrels, local population, which hampers the project. Suppose they will create a problem. They don't like this. They don't like that. They will strike on the road. This type of problem I don't like. means they always There prevent is always a try to create local the issues. local. Yes, a local area, local people, they always create some type of. So they Like, also have some types of demand. Why you are making noise in the so much night? Suppose casting is happening, and up to late night we are casting. There will always some people which will tell why you are casting. I understand their problem also, but what can be done? Construction work is hectic, and it happens. what there is no solutions for that, na? That No, is sir, that's why. Hmm. okay. So you like you feel in every projects there is a problems, right? From neighbors. Yes. Neighbors, yes, sir. Neighbors, and sometimes material procurement is also a bigger issue. Okay, Sometimes we wait for the sand to arrive, the sand does not arrive, cement does not arrive, steel does correct, not arrive. These correct. are the things the most common in almost every site which I have worked. What you think, like which think if improved in site engineering that enhance the civil engineering qualities, ऐसा क्या लगता है तुम्हें कि ये चीज अगर हो जाए तो सिविल इंजीनियर्स का रेपुटेशन बढ़ जाएगा एंड थोड़ा वर्क आसानी से हो जाएगा? एनीथिंग यू फील लाइक दैट? Sir, I think the most primary part is that if someone in our company, responsible person, if talk to the local people, what they actually felt problem. Suppose I understand that people work whole day and they want to sleep peacefully in the night. So I understand their local issue that they don't want the noise to be happened on the middle of the night. That problem I understand. So I like that if some company's person just talk to local people and manage the problem without dispute, this will help. And secondly, about material procurement is that suppose we talked in the advance for the sand contractor, cement contractor, and aggregate contractor. They if we talk to them in the advance, so that they do not क्या कहिए लेट नहीं करे सर मटेरियल पहुंचाने के लिए मतलब कि साइट पे, तो ये सब प्रॉब्लम दिस थिंग इफ दिस types of problem solved, then site engineering job is also good. Okay, so according to that, dispute is the main problem. Like if you place like work anywhere,
so they try to create the issues, right? And Yes, if sir. Sometimes I think there's a company's problem. Sometimes there is also local problem. Sometimes local have genuine problems. Sometimes company have genuine problems. I some think that this sometimes is people try to the create the issues, sometimes people try to create the issues, right? these things are thought that people have a mentality that if some big project is there, the project the company has a lot of money, so let's take some money. This type of the problem is the main issue. That problem I also face sometimes. Okay, uh what's your strength, Shashank? Sir, my currently student after doing 4 months job, 4 months internship job. Besides, I am good at execution on site. I am also become quite good in designing field, also in structure field. I have no problem in designing up to G+5. I can do static analysis. I can do dynamic analysis. I have no problem in up to G+5. I am a little bit confident about it. In further, I will when I work in your company, I will more confident and I see myself in 5 years as a good structural engineer. Okay, what's your weakness? Sir, weakness can be said that as presently I am a little weaker in technical issues for structural engineering. I am not very good in structural technical issues. So this is the weakness currently. So that is why I am working on it, and I'm sure that in the coming year I will eradicate this weakness also. Very nice, very nice. Already you are improving right now. Also, you're improving your communication right now. What I checked from your previous mocks, you improved in communications as well as you improved in technical also. Very good, Shashank. This was nice to talk with you. Thank you, Now sir. let's come with Shahiti. Shahiti, Good evening, sir. good evening. Shahiti, what is the meaning of your name? It's literature, sir. It's Literature. literature. Okay, great. Shahiti, introduce yourself. I'm Sahiti. I've completed my MTech from CDR College, and I have 4 years of experience from BGR Energy Systems. Um, right now, I'm doing an internship in Unix 7. Uh, I have good knowledge on STAD, ETABS, AutoCAD, and right now I'm working on Revit. Very good. What you learn in Revit right now? What you feel like this is I can do in Revit? Uh, in Revert, now I learned how to first of all from basic of Revert. I have a good idea of doing walls and how we can put properties for that material properties for the walls. How can we architecturally? How can we represent a building? That's what I learned in Revert. Uh, Types of array in Revit. array in Revit, radial array and another one rectangular. Approx rectangle but not rectangular. Uh, Okay, how many lectures you watched in Revit? Actually, I watched it till 12th half. After you told mock, I shifted for revising. Okay, I okay. couldn't complete that in class. So what you revise before mock? What topics you Then revise? I I just revised the concepts of AutoCAD and seismic analysis PDF and Wind. Then I revised format of Revert or some basic things of Revert. Then full forms of this STAD, ETABS, that all I just revised all these things. Correct. Very good. Okay, Saiti, just tell me what is the use of sweep command in Revit? Shift command Sweep, sweep, is sweep, you sweep. SWEEP, sweep. sweep command. Sweep command is used for this circular cylindrical. If we draw an arc, sweep, Mhm. sweep blend. Sweep command is used for
follow the path, right? Yes. ठीक है, Follow follow the, the path of the shape, which type of shape we required. What do you understand by massing and sight? what's the What do you massing and sight? You attend the lecture? no, sir. I No, did not not. sure. Okay. If live load is 4 kilonewton at the time of earthquake, how much live load we considered as per IS code? As per IS code, if it is greater than 3, we consider 50%. If it's less than 3, we consider 25%. Very good. So, like, what is the use of mass source in Revit? Sorry, in ETAPS. Mass source is related to earthquake analysis only to add additional dead load and live load. What do you understand by diaphragms? Uh, diaphragms in ETAPS. Yeah, Diaphragm is to point out the center of gravity of the whole structure. very nice. What is the use of purge command in AutoCAD? Purge is used to delete unused items. Delete unused. Correct. Okay, parameter is not completed. Okay. In AutoCAD, there is a command data extraction. What is the use of data extraction command? Data extraction. AutoCAD, so data extraction. So Anyone know? They can do the comment. Okay. What's your strength, Swati? my strength is my hard work on this, my punctuality and hard work. And I even if anyone don't assess me or anyone don't ask me also, I want to complete my work on time. Very nice. So Yes. your time punctuality is your biggest strength, right? And what's your weakness? Weakness is sometimes I lose my confidence even though I'm correct. I want someone to check it before submitting. Correct. So that is your weaknesses. Mm. Why should I hire you? Um, basically, I'm a person who is punctual to the work, and uh, I for the organization the base is even if we are in the basic level, if we are punctual and if we are dedicated, we can give our best to that organization. Correct. So if you hire me, I am a person who want to learn something new things, even if I don't know, and I will put my extra efforts on it to complete it. So it would be a win-win situation for both the company and me. I would learn the new things, and the company will can submit to the client in a time limit, whatever time limit. So it Great. would, Very nice. Very nice, Saiti. Great. Saiti, one of your friend was before the when you just joined the training that time, call you, na? Call me yes, also, right? yes, sir. Okay, I just recall the name. Okay, Um, Saiti, thank you so much, and then definitely you are doing good. Just try to work as much as possible on technical so that you can crack high level of exams. Okay, you applied anywhere? Not looking right now, no? no, sir. But I will apply from next week, sir. I'm Okay, also focused on that now. yes. Try to search in official job. If you improve Rabbit for now, ठीक है, definitely you can get easily official job at your home. Okay, and after that you can exchange that right after a few years, right? Yes. Okay, thank you so much, Aiti. Yeah, Thank you, sir. Sir, one doubt. yeah, Tomorrow we will have class. yes, we have classes tomorrow. Okay. Okay, tomorrow I'll check your assignments. What you completed in Rabbit? You completed today? Yes, sir, I completed, but actually tomorrow I can attend or not. There is a confusion. That's why I was asking. Okay, no issue. If you're not attend the tomorrow, we'll continue Saturday also. Oh, Okay.
Okay, no sure. Thank you so much, Shahid. Yeah. Thank you. Now next is Mr. Atish Patil, and then Samir, then Vikram. Hello, sir. Yes, Atish. Atish, tell me something about yourself which is not mentioned in your resume. Uh, yes, sir. Basically, sir, I'm a hardworking person and I'm a very time punctual. I just consider my work as a challenge, and I just want to complete it, and I like to learn new skills as I can. Uh, Okay. yes, sir. Give me an example of your time punctualities. Type punctualities. Actually, sir, in my college time, there is a assignment date which I actually going to submit before the deadline. That is, whenever a teacher give me the assignment, I'll complete it at that time. Not at the end of semester. At the time of Viva. Okay, very good. What's your weakness, Atish? Weakness, same as Saiti said, that I just have to check my work no, to someone. Someone has to check my work. That I'm not pretty much confident about Got it. whatever I do. I have confidence, but I have to make sure that someone has to check. Then there is surety. You feel more confident. Yes, sir. Okay. What's your plan for your future, Atish? uh, Plan for future, what means, yeah, in terms of, In terms of academic, or in terms of definitely you are doing job right now. So yes, sir. in terms of industries. Sir, I want to work as a senior structure engineer in after few years, Okay. next few years. So In as I want to wherever I want to work, I will learn all the skills, and definitely, as per growth, I will leave the company, and Okay. I will learn new skills in new companies. Okay. What's your hobby? Hobby, I like drawing. Uh, uh, I like uh, I like reading, and like to watch match cricket. Which book you like most? Uh, which book? Uh, there is a book of Savarkar, Swatantraveer Savarkar. That is Vinayak Damodar Savarkar. Maji Janmathep. माझी That I like the most. Maji Janmathep. That is, sir. मेरी Uh, मातृभूमि. नहीं सर. उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट का ये हुआ था सावरकर ना. सावरकर जी को. यस आई नो. वो उसमें उन्होंने मतलब बहुत अपने बारे में लिखा है, उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया है वो सब. So you mentioned that Maji, last word what was? जन्मठेप, imprisonment, that is. So what is the meaning of that? Janmade means Imprisonment, that is imprisonment. Okay, okay, okay. In jail, उम्र कैद. umr kaid के हिसाब से. Okay, okay. But when sorry, he was in umr kaid, there was a very difficult na. So at what time he read? Write the book. Sir, actually, he got the I think he just tells the उनको stories. सर. Someone write that. यस सर. उनको नहीं सर, उनको एक्चुअली वो काला पानी का सजा मिला था अंडमान निकोबार जेल में. तो Yes, yes. मतलब उन्होंने ना अपने मतलब थिंकिंग के ऊपर काम किया था, या मतलब जो कुछ भी उन्होंने मतलब लिखा है, वो उन्होंने बहुत सारे पोएम्स भी लिखे थे, वो उन्होंने बनाए और याद कर डाले, मतलब लर्न कर डाले, और वही सब बाद में जाके लिखे. Okay, अच्छा, great. वहां पे कुछ था नहीं ऐसा लिखने को वगैरह. काला पानी बहुत खतरनाक सजा होता है. यस सर, वही. You can't stand fully. You just sleep
for long years. That is the life motivation that Yes, what he suffered. correct. Okay, Atish, why we provide ductile detailings in any RCC buildings? Ductile detailing. Ductile detailing basically give more strength to the to our structure. Whenever there is a large kind of earthquake load, or we can say whenever there is a high-rise building or high-rise structure, then we have to provide a ductile detailing, which gives us the more strength or durability. Actually, that increase the section of our steel in our building. Uh, Basically, sir, ductility is gives Extra reinforcement yes, sir, to extra reinforcement, extra strength, for enhance the flexural strength of the like structures. the restaurant. Yes, sir. To Okay, resist lateral load. to resist the lateral loads. What is the role of steel in RCC buildings? Uh, Actually, sir, uh, steel is as simple as, sir, bone in our body. That is the same role what steel does in RCC structure. It gives us the tensile strength to the structure. If the steel is not there because of tension, structure can fail. Very good, very So, nice, excellent answer. Thank you so much, Atish. This was nice to talk with you. Now let's come with thank you, Mr. sir. Shamir and then Mr. Vikram. Mr. Shamir, Good evening, sir. good evening, good evening. Difference between response spectrum analysis and time history analysis. You know about that? How much cover we provide for slab? Time response, sir, is a value which gives us the building information about the building is safe or not, and the response factor is a factor which is we give 5 OMRF and SMRF. How much cover we provide for slab? 20 mm. 20 mm. Maximum how much cover we provide for any structure, and minimum how much we can provide for any structures? 75 mm. Approximately 75 mm. I Or can remember a right now. minimum 15 mm. 15 mm. What is the mixed proportion of M25? 1:2. One is cement and one is sand and two is aggregate. How to calculate wind pressure? Wind pressure is calculated by the formula VB into K1 into K2 into K3, and K4 is considered when the cyclone factor is Explain K1, K2, K3. K1 is a terrain factor and K2 is a Okay. K2 is for How many seismic zone in India, and what are the factors of that seismic zones? there are 4 zones in India. First one is seismic zone 2, 3, 4, and 5. Seismic zone 2 is 0.1, and 3 is 0.16, and 4 is 0.24, and 5 is 0.36. Okay. What's your hobby? Learning softwares, reading, and that's it. Reading the books. Books like recently I read the most earthquake resistant building structures, Earthquake like resisting. earthquake resistant building structure, which I can read the most for preparing my PPTs, like strength, ductile and stiffness. What is And ductility? ductility, What is strength?
Strength, strength, sir, is strength. We can. Sir, I cannot prepare that topic, sir. What's your weakness? Sir, I am detailed oriented. What's your goal? Sir, my main aim is to join job. Sorry? Sir, my goal is to join a job in as a structural design engineer. Okay. Thank you so much, Shavit. This was nice to talk with you. Now, Vikram. Yes, Vikram. Vikram, there is a network issue again. In your every mock, there is some network issue, right? आवाज जा रही है क्या? इसके पिछले मॉक में भी ऐसे हो गया था और इसकी वजह से इसका मॉक तो पूरा नहीं हुआ था. हेलो विक्रम. ठीक है, आज काफ़ी लोगों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है. ठीक है विक्रम यार, आवाज़ तुम्हारी नहीं आ रही है. हो सके तो एक बार लेफ्ट करके आ जाओ दोस्त. ठीक है, आवाज़ तुम्हारी बिल्कुल नहीं आ रही विक्रम. हो सके तो एक बार लेफ्ट करके आ जाओ. नितिन, थोड़ा सा तुम मेहनत कर दो यार. ठीक है, मेहनत कर दोगे तो तुम्हारा हो जाएगा. ठीक है, तुम बीच में बहुत अच्छा कर रहे थे. पता नहीं क्यों इधर तुम 15-20 दिन से तुम्हारा बहुत निगेटिव जा रहा है, पता नहीं क्यों. ठीक है, तो इसको थोड़ा अच्छा कर लो, बेटर हो जाएगा नितिन. यू गॉट 3.5 मार्क्स. शशांक गॉट 7. शशांक काफ़ी अच्छा इंप्रूव कर रहे हैं. ठीक है, और शाहिती तो एक्सीलेंट कर ही रही हैं ऑलरेडी. सी गॉट 7. आतिश बहुत अच्छा आज परफॉर्म किए हैं, 6.5. समीर बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस मॉक्स, 5. तो कुल मिला के अभी धीरे धीरे लोग इंप्रूव तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं. ठीक है, थोड़ा थोड़ा और कर दोगे तो बेस्ट हो जाएगा. विक्रम, एक बार माइक ऑन करना. फिर से वही आ रहा है. ईयरफोन लगा तो ईयरफोन हटा दो. विक्रम, अगर ईयरफोन लगाए हो तो हटा दो. हेलो. देखो, आज साहिती ने आज भी प्रोजेक्ट किया हुआ है, नो डाउट. फ्रॉम टाइम पंचुअलिटी, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग इन्होंने सारा प्रोजेक्ट किया हुआ है. ठीक है, मैं बंद कर रहा हूँ क्योंकि इसको विक्रम पॉसिबल नहीं लग रहा है यार. ठीक है, तो थोड़ा सा अगर टाइम पंचुअलिटी. हेलो. हाँ हाँ समीर बोलो. सर, जा रहे हो आप? नहीं, कहाँ जाऊँगा. ओके सर, मुझे लगा आप बंद कर रहे हो. नहीं नहीं, क्वेश्चन पूछो. कुछ प्रैक्टिस किया हो तो क्वेश्चन पूछो कि सर ये पढ़ा था, ये क्वेश्चन. रिवीट का स्टार्ट किया था सर, लेक्चर 10. उसने एस्टिमेशन स्टार्ट किया ही था जस्ट, तो अभी वही करूँगा आज. हाँ ठीक है. और नितिन, तुमने कुछ किया क्या रेबिट में? यस सर, सेंड कर दिया मैंने. ओके, वेरी गुड. ठीक है, मतलब मजा आ रहा है ना थोड़ा इसमें रेबिट में? हाँ हाँ सर. वेरी गुड. बस यही चाहिए था अपने को कि कहीं पर आए. एक्चुअली देखो, हमें कोई भी कोड लगे कि ये बहुत अच्छा जा रहा है तुम्हारा. हाँ शायद बोलो. सर, आपने एक क्वेश्चन पूछा था ना रेविट में मासिंग, उसका आंसर क्या? मासिंग एंड साइड. ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछा था एरे. एरे के दो पार्ट हैं, लीनियर और रेडियल. ठीक है, और लीनियर और रेडियल. और मासिंग एंड साइड मतलब होता है क्लोज बिल्डिंग कॉन्सेप्ट को बोलते हैं. क्लोज बिल्डिंग कॉन्सेप्ट मतलब कि क्या बोलते हैं, पूरी की पूरी जो बिल्डिंग्स है वो क्लोज हो. ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्लोज बिल्डिंग कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर पहले उसका आउटर एरिया फिक्स कर दिया. जो पीछे की बिल्डिंग्स देख रही हो ना, ये सारी बिल्डिंग्स जो है मेरे वॉलपेपर पे, ये सब मासिंग एंड साइड कॉन्सेप्ट से बनी हुई है. मतलब पहले इनका आउटर डिसाइड कर लिया जाता है और उसके बाद अंदर, जैसे से सपोज मुझे एक फ्लोर पर बैंक खोलना है तो बैंक के अकॉर्डिंग देखो अंदर प्लानिंग हो जाती है. ठीक है, फिर दूसरे वाले फ्लोर पे गए और तो दूसरे वाले फ्लोर पे हमें पता चला कि हमें एक कोचिंग खोलनी है, तो कोचिंग के अकॉर्डिंग क्लासरूम्स बना देते हैं. फिर तीसरे फ्लोर पे पता चला कि लोन का डिपार्टमेंट कोई है, तो मतलब आउटर फिक्स हो जाए पहले और पूरा का पूरा क्लोज हो, कांच की बिल्डिंग हो, और फिर उसके बाद अंदर की तरफ प्लानिंग करें, तो दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड मासिंग एंड साइड कॉन्सेप्ट. ठीक है, मतलब आर्किटेक्चरली पहले हम प्रेफरेंस करते हैं. एग्जैक्टली. और उसके बाद अंदर एज पर रिक्वायरमेंट प्लान कर लेते हैं. देखो मैं कुछ मासिंग एंड साइड की बिल्डिंग्स दिखाता हूँ तुमको और अच्छे से क्लियर होगा. यहाँ पर जस्ट ऊपर पे डाल देना कि मासिंग. अब
देखो यहाँ पर जो तुम्हारी बड़ी बड़ी कांच की बिल्डिंग्स दिखेंगी वो ज़्यादातर मासिंग एंड साइड से बनी होती हैं। जैसे ये देखो, ये पूरी कांच की बिल्डिंग देख रहे हो ना। अब इस बिल्डिंग का पहले इस बिल्डिंग को बना दिया गया है, ठीक है, और बनाने के बाद इसके अंदर प्लानिंग किया गया है, तो उसको बोलते हैं मासिंग एंड साइड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, जो बिल्डिंग को पहले बना लो फिर अंदर डिजाइन करो तो उसको बोलते हैं मासिंग एंड साइड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, चलेगा। चलो, और अभी तो मैं आपका असाइनमेंट्स देख नहीं पा रहा हूँ, देखने की बहुत ज़्यादा इच्छा है मुझे, बट अभी मजबूरी है, मैं देख नहीं सकता। मतलब मैं देख सकता हूँ, मतलब आपके प्रोजेक्ट्स तो नहीं देख सकता क्योंकि आई डोंट हैव क्या राइट नाउ सॉफ्टवेयर। मैं कोशिश करता हूँ आज रात में कैसे भी करके इंस्टॉल करूँगा। फिलहाल मैंने प्रयास बहुत किया है, अभी 2023 फिर से डाउनलोड किया है। लेट्स सी, अगर यही हो जाए तो अच्छा है। 24 नहीं हुआ, 20 नहीं हुआ, आप देखते हैं ये वाला हो जाता है तो अच्छा रहेगा। कोई टेंशन नहीं है, हम आपके असाइनमेंट्स को तो हम चेक ही कर लेंगे। अभी आज आप लोग क्या करिएगा, सिर्फ और सिर्फ लेक्चर नंबर 15 तक लेक्चर वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि आपने काफ़ी मॉडल बना रखे हैं। कल एक नया मॉडल बनाएंगे, आज सिर्फ लेक्चर 15 तक बना के एक एक्सेल सीट रेडी कर लेना, क्योंकि 15 तक मेन लेक्चर है जिसमें आपको रेंडर भी मिल जाएगा, जिसमें आपको कैमरा भी मिल जाएगा, मटेरियल भी मिल जाएगा। उसके बाद जो है छोटे छोटे डाउट्स के क्वेश्चन हैं जो कि बहुत आसान हो जाएंगे। तो आज सिर्फ और सिर्फ आप लेक्चर नंबर 15 तक वॉच करके एक्सेल सीट क्रिएट कर लीजिएगा, और आगे का हम लोग कल डिस्कस करेंगे। उसमें कल क्या मतलब एक प्रोजेक्ट देंगे आपको करने के लिए, जिसमें आप आराम से उसको टाइम लेके बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट को रेडी करके, जो उस प्रोजेक्ट में दिक्कत रहे मुझसे पूछो कि सर इस प्रोजेक्ट को करने में ये दिक्कत आ रही है, जैसा रहेगा फिर उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। विक्रम, अभी क्लियर है क्या आवाज? एक बार और ट्राई कर लो यार, तुम्हारा मॉक लास्ट टाइम भी नहीं हुआ था, इसलिए मैं चाह रहा था तुम्हारा मॉक हो। हेलो सर। हाँ, अब क्लियर हो। कैसे, क्या हो, क्या किया? वही डेली ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, आई थिंक। हाँ, इंटरनेट का प्रॉब्लम है, समझ सकता हूँ। वो क्या होता है, अभी विलेज एरिया में ऐसे ही प्रॉब्लम होता है। मैं घर जाता हूँ तो मेरे साथ इतना गंदा हाल होता है ना, व्हाट्सएप नहीं खोल सर, पाता हूँ। पहले प्रॉब्लम नहीं था, आईपीएल जब से स्टार्ट हुआ इस वीक से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो फिर अंबानी का हाथ है क्या इसमें? क्या मालूम नहीं सर, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ काम सर। 2 दिन तो बिजली भी नहीं था, ये बारिश हो गया था। हाँ ना, बिजली का तो बड़ा दिक्कत है यार, मतलब क्या कहें बिजली को। भी मेरे घर में खुद ही बिजली का बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, और हमारा इन्वर्टर खराब हुआ, एक लोग से रिपेयर करवाया, ऐसा रिपेयर कर दिया कि मुश्किल से 15 मिनट का बैकअप देता है। हमने कहा ये तो यूपीएस बना दिया ऐसे नहीं इन्वर्टर को। ठीक है, तो अभी बहुत दिक्कत हो रहा है। सही बात है, लाइट अभी कैसे ना हीट बहुत बढ़ रहा है, तो लोग क्या कर रहे हैं, एसी बहुत ज़्यादा चला रहे हैं, तो लोड बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। और गांव में मैंने पावर हाउस में भी बात किया तो बताया कि अब ज़्यादा बिजली दे देते हैं तो आग लग जाती है गेहूं की खेती में, तो पूरा का पूरा खेती बर्बाद हो जाता है। इसलिए दोपहर में अवॉइड कर रहे हैं, और दोपहर में ही गर्मी लगती है। चलो, क्या मॉक दे सकते हैं हम लोग? कंटिन्यू हो सकता है विक्रम? प्रॉब्लम नहीं। सुबह के टाइम पे तुम्हारा सही रहता क्या नेटवर्क, सुबह के मॉर्निंग में टाइम पे? हाँ हाँ मॉर्निंग में सर, बड़े रिक्वेस्ट। हेलो सर। हाँ, बोलो बोलो बोलो। हाँ विक्रम, सर बोलो। मॉर्निंग वाला बैच में से ज्वाइन कर सकते हो क्या? कर लो, मॉर्निंग वाला बैच में ज्वाइन कर सकते हो क्या? कर लो सर बेटी। प्लीज कर दीजिए ना। करने का मतलब ये है कि अटेंड करना। डेली करूंगा सर, ठीक हाँ है, डेली करूंगा सर। बस कोई इतना तो सुन। अभी हाँ, तुमने अगर सर ये क्लास प्रॉमिस कर में दिया हुआ कि अभी। अटेंड करते, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है सर। हाँ, बोलो बोलो। और एक सर, बीम क्लास मेरे को अभी ज्वाइन नहीं करना है, मेरे हाँ से वो जो सर बीम वाला कोर्स है ना, हाँ वो लेके रखूंगा सर, करूंगा। सर बीम जो डिस्काउंट सर सेम ही होगा क्या? हाँ। देखो, बीम को अभी वीडियो लेकर रखो, और फिर इसके बाद क्या बोलते हैं, अभी हाँ बीच में वही ना, सर। बाद में जब लाइव चलेगा तो लाइव कर लेना, अगर अभी नहीं करना है तो, है ना? सर जब वही अभी सर सिर्फ वीडियो लेके रखूंगा। हाँ, अभी से वीडियो लेकर रखो, क्योंकि अभी तुम स्ट्रक्चर पर फोकस्ड हो, है ना? तो 2 में मैं खुद ही नहीं बोलूंगा तुमको वही करने सर। में। हाँ अभी देखो, नितिन बीम में करेगा, क्योंकि अभी नितिन ने स्ट्रक्चर्स कर लिया, तो इसको बीम में करना है, तो वो अलग है। एक साथ 2 नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फिर प्रैक्टिस नहीं हो नहीं पाती नहीं है सर, हमारी। मैं अभी नहीं करूंगा। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने वो थोड़ी सिर्फ बताया कि आफ्टर फ्यू टाइम कर लेना। तुम ऊपर मॉर्निंग वाले बैच में ऐड हो जाओ, ठीक है, और उसमें ही तुम मॉक दे दो, क्योंकि सुबह शायद नेटवर्क भी सही रहे तुम्हारा, और तुम्हारा प्रैक्टिस एक बार फिर से रिवाइज करो। अभी हाँ स्टैट प्रो हाँ चल सर। रहा है, तो अच्छे से एक बार ईटैब भी रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा, है ना? ठीक है, तो आराम से कर लो, कोई टेंशन नहीं है। मैं सुबह ऐड कर ओ दूँ, यस मतलब मैं सर। तुम्हें ऐड कर देता हूँ, ठीक है, चलेगा। ठीक है, कुछ लोग ओके को मैं सर, इसलिए थैंक यू वेरी मच सर। हाँ, ओके।
कोई बात नहीं, मोस्ट वेलकम। एंड टाइम रिस्पॉन्स जो क्वेश्चन था स्ट्रक्चर डायनामिक में से, वो सर थोड़ा एक एक दो लाइन में एक्सप्लेन कर देंगे? वो बता दूं क्या होता है ऐसा? हाँ सर बता दीजिए। ठीक है, देखो रिस्पांस स्पेक्ट्रम में तुमको बताना था कि हम उस पर डायनेमिक एनालिसिस करते हैं और एनी स्ट्रक्चर्स उसके अलग अलग सर्कमटेंस अलग अलग मोड्स पे उसके रिजल्ट्स को देखते हैं, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम उसके बिहेवियर का पता करते हैं कि हाउ इट परफॉर्म एट द टाइम ऑफ डायनेमिक एनालिसिस, और जिसमें डिफरेंट डिफरेंट लोड अलग अलग टाइम पर आएंगे। और जो टाइम स्ट्रीम बताना था वो सिंपल बता देना था कि क्या बोलते हैं, फ्रॉम टेकिंग द प्रीवियस डाटा, previous heavy earthquake data, we check the structures, is it pass or fail in that data, बस इतना सा बताना था, ठीक है। सर एक सर एक क्वेश्चन और था कि जो IS कोड्स हैं सर हम स्ट्रक्चर डिजाइन में यूज करते हैं, उसमें सर हम जैसे कितने कोड लेके चलें? जैसे एक तो SP वाली सीरीज हो गई, एक सिस्मिक वाली, विंड वाली। परसों यही लेक्चर पढ़ाया था मैंने, परसों का लेक्चर देखा तुमने? मैंने कल कल एक क्लास लेक्चर पेज नंबर 8 पर देखो, सारे IS कोड की लिस्ट दिया हुआ है जो जो इम्पोर्टेंट है। पूरी बिल्डिंग को कैसे मैनुअली डिजाइन करते हैं वो वाला लेक्चर देखा कि नहीं? परसों वाला लेक्चर, हाँ परसों वाला लेक्चर जाके देखो, उसमें मैंने IS कोड भी बताया है, कौन कौन सा उसमें से क्लॉज पढ़ना चाहिए, क्लॉज के नंबर्स भी उसमें दिए हुए हैं, बस उतना पढ़ लो सफिशिएंट है, ऑलरेडी मैंने सब बता दिया है। अगर सर सेम क्वेश्चन आ जाए इंटरव्यू में, जो 5-10 हैं कोड्स वो बता दें जाए तो ठीक रहेगा? हाँ वही ना, सारे कोर्स में लिस्ट दे दिया मैंने कि कौन कौन से कोर्स आपको आने चाहिए, ठीक है। पेज नंबर 6-7 पे देखो, अभी तुरंत देखो, ग्रुप में मैंने भेजा भी है वो, ठीक है, तो उसमें दिया हुआ है मैंने, हाँ PDF देखो, ग्रुप में दिया हुआ है मैंने, ठीक है, चलेगा, ओके ठीक है। तो अभी हम लोग, हाँ शशांक बोलो। सर बोल रहे थे सर स्लैब डिजाइन के बारे में, सर मतलब किस लेक्चर में पता नहीं चला। सेफ अभी हम ही कंप्लीट किए हैं, अभी सीधे स्टैट प्रो और ई टाइप कंप्लीट हो गया है। नहीं तो स्लैब तो सेफ में ही करोगे ना, एक स्लैब में करोगे, एक RCDC में करोगे, और एक एक्सेल में करोगे। एक्सेल में मैं कराने वाला हूँ, एक्सेल में बचा हुआ है अपना, ठीक है। एक्सेल में मैं एक वीकेंड्स पे कराऊंगा, क्लास मत मिस करना। अभी कैसे कि कल तक तो हमारी कंसिस्टेंसी से क्लास चलेगी, उसके बाद थोड़े से जैसे कि फ्राइडे को ऑफ रखेंगे, फिर सैटरडे संडे भी ऑन रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक हफ्ते का आपको ब्रेक दे देंगे, उसमें सारा आप एक बार रिवाइज कर लेना, फिर नेक्स्ट सैटरडे संडे और हो सका तो एक फ्राइडे भी उठा लेंगे, तो 3 दिन में पूरा प्रॉपर एक बार फिर से रिवाइज कर देंगे, ठीक है। फिर अगर और जरूरत पड़ी तो एक और सैटरडे संडे ले लेंगे। तो इस तरीके से आपको टाइम में तो बहुत दे रहा हूँ, रेविट आर्किटेक्चर के लिए भी टाइम दूंगा, रेविट स्ट्रक्चर के लिए भी टाइम दूंगा, क्योंकि देखो सैटरडे संडे मेरा भी फ्री है, और मैं 7 तारीख तक तो अभी फ्री ही हूँ क्योंकि घर नहीं जाना अभी, तो तब तक आप खूब प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग का सिलेक्शन हो, आपको नहीं पता बट अभी देखिए आतिश है नहीं, आतिश के सिलेक्शन से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि रिजल्ट मिला, ठीक है। मतलब कैसे होता है ना, हम अपना 1.5 घंटे अगर हम 4 महीने का लगाते हैं ना, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य किस चीज़ पर रहता है, आपके रिजल्ट पे। अभी विक्रम ने बोला सर मुझे और पढ़ना है, मैंने बोला पढ़ो, क्यों, आई वॉन्ट रिजल्ट, ठीक है। एनी हाउ आप कैसे भी करो रिजल्ट दे देते हो, तो ऐसा लगता है, हर किसी को लगता है यार कि अगर रनिंग कर लिया और उसके बाद फिर आपका वेट कम हो गया, मतलब रिजल्ट मिल गया, खुशी होती है, ठीक है। तो मैं क्या बोलते हैं, सेब वाले लेक्चर्स कर डालो शशांक, कोई डाउट रहेगा तो बताना, ठीक है। कुछ ई टैब में भी कोई डाउट रहेगा तो मॉर्निंग बैच में भी आके तुम पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तुमको बस पढ़ना है, और पढ़ने के लिए बस जब वैसे तुम नहीं कर पाओगे सुबह के बैच में, मुझे पता है तुम्हारा प्रॉब्लम होगा जॉब का, है ना। शाम वाला सर शाम वाले में भी बहुत अभी लेट होगा, अभी स्टार्टिंग में मत करो क्योंकि बहुत स्टार्टिंग ऑटो कैड से होगा, ठीक है। तुम्हें करना है ऑटो कैड में छूट गया था सर मेरा, तो ऑटो कैड से कर लो, ठीक है। ऑटो कैड से कर लो, मुझे DM कर देना, मैं अभी ऐड कर दूंगा, ठीक है। विक्रम को भी ऐड करने जा रहा हूँ, तुम भी कर देना, तुमको भी कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। ओके जी, चलिए जी, तब तक आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल हम लोग मॉडल चेक करेंगे, तब तक हो जाए मेरा रेविट, होप्स हो। और फिर उसके बाद जो डाउट रहेंगे आपके बताएंगे, आपने बताना, आज कुछ बढ़ाना नहीं है, लेक्चर 15 तक केवल रेविट वॉच कर डालो बस, ठीक है। चलिए ठीक है।